नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल। और जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ईपीडब्ल्यू वाली, ईपीडब्ल्यू जैसे मैंने पहले भी सीरीज के अंदर बोली है, एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आज के आर्टिकल में इतना नोवल कंटेंट मिलेगा आपको कि योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग of a particular topic today, democracy, would drastically change. Different scholars belonging to the highest possible positions in their respective field have debated and redebated on this. इस आर्टिकल में मेरा गोल आपसे ये है, डेमोक्रेसी क्या है समझाना नहीं। मैं ये आर्टिकल्स कोई रूट से लेके एक्सट्रीम तक नहीं समझाऊंगा। आई जस्ट डिस्कस द आर्टिकल एज इट इज और आपको उसकी यूजिबिलिटी बता दूंगा कि इस वाले पार्ट को कहाँ पे यूज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज EPW's October magazine carried a book review. There are many book reviews which often come and these books are fantastical. The book's name is Idea of Democracy. The book is written by Manas Ray. He has compiled various opinions and articles written by different scholars with respect to the stature, idea and the essence of democracy with respect to the Indian society. As far as the sociology is concerned, power and politics and society, the way you want to tell it, there is an important topic called as democracy both in paper 1 and paper 2. As far as your GS is concerned, paper 2 के अंदर हम democracy देखते हैं. And this entire article is going to be useful for you even with respect to your vulnerable section, social justice part of paper 2 and at the same time inclusive growth of paper 3 and more importantly with respect to the very practices of and nuances of democracy in paper 4. तो मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके चारों पेपर में लगभग इंपॉर्टेंट है और सोशलॉजी में तो 100% ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल स्टार्ट होता है, ये बुक रिव्यू है जहां पे यहाँ पे स्टार्टिंग जो थी इस आर्टिकल की वो थी कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीपल आर लार्जली गेटिंग डिसएन्चेंटेड विद द वेरी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बट येट वी सी देयर इज इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी. In fact, the more democratic states are under the sway of violence, autocracies, charismatic rule, single-handed domination and rules of parties and charismatic leaders. We often see, जितना ये बढ़ते जा रहा है, उतना ही the people are becoming more resolute with respect to ensuring democracy and they are demanding more rights, more democracy. You can see the present Indian scenario where we often see there is a rise of autocratic tendencies. This is not new. In fact, it also happened when certain charismatic leader occupied the power during the times of 1950s and also during the time of 1970s and 80s. Same thing is happening today. Certain charismatic people are occupying the power and as a result they are operating the institutions as per their wills and wishes rather than operating it with the use of democratic procedures. Raghuram Rajan once said, the character of the leader determines the character of the institutions, which sounds so and so true today in the contemporary times. So therefore, in the initial phase in this article, it was discussed that how democracy, people are getting dissatisfied with it, but more the system is becoming autocracy, the more the demand is for the rights. आगे बढ़े तो मानस रे ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है। ये कुछ कोट एंड कोट के स्टेटमेंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल हियर is specifically meant so that you should use exact statements with respect to the topic when you come. There is no denying that those looking for institutional purity of democracy as practiced in India have reasons to be disappointed. Those people who are looking into the not essence of democracy but the institutions of democracy with respect to electoral politics, with respect to elections, EVMs, transparencies, accountabilities. If you are measuring the Indian democracy from the structural perspectives, definitely there are reasons to be seriously disappointed as advocated by a person called as Manas Ray, who has written this book called as Idea of Democracy. Ab, in this particular article and as far as this book is concerned, there is certain positive aspects of Indian democracy which has been highlighted. There have been pro-people deepening of democracy through a series of legislation such as National Food Security Act, SC/ST
Atrocities Act, prohibition of that, untouchability से related prohibitions, with respect to marital rapes we are debating today, with respect to abortion right we are actually discussing and debating. So therefore definitely pro people deepening हुई है, because certain legislation which are targeting the well-being of the people and trying to ensure social justice have been formed. Greater participation of formally excluded sections, those people who are excluded either on the basis of the gender, ethnicity, tribal identities, or for that matter caste identities, they are more or more getting ingrained into the democratic spirit, and they have their participation have increased. For example, in the recent elections of Nagaland, we see for the first time women legislatures were MLAs were elected in the Nagaland assembly. आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, despite Nagaland being a matriarchal society. The hidden hand of patriarchy was present. For the first time, I think, as far as I recall, 2 women legislators were included, because this clearly shows, yes, there is a deepening. More excluded people are actually participating today. And the last but not the least, there is an increasing growth of civil society activism. This clearly shows that how there are civil society, the groups which are largely formed with the spirit of helping the people, achieving the social justice goal and ensuring well-being. These organizations are becoming very active. You can see Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, you can see organizations such as India Against Corruptions. They are largely trying to build that awareness among the citizens. So all these 3 are the positive points of the Indian democracy. But however, everything is not good. As Manas Ray himself advocated, they have reasons for being dissatisfied. They have reasons for being dissatisfied with respect to the structural aspects of Indian democracy. Let's see, ये क्या जो challenges है वो दिखाई देता है. State of Indian democracy, if you look into the challenges, जीन रेस को कोट किया मानस रेज ने. Democracy and rights to food, जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, Indian democracy lags behind in terms of social rights and economic equality. Definitely, we have certainly become more politically equal society, but as far as the social and economic equalities and rights are concerned, according to Jane Trace, in the article Democracy and Right to Food, they are yet remains an unfinished agendas. इससे आगे जाए, विसरिया बोलते हैं, large population with employment deficit is present, which definitely hampers even the economic equality here, advocated by and accepted by Jean Reyes. Populism is becoming an intrinsic or intertwined aspect of Indian politics. Example, where the policies are framed by keeping not into account the policy aspects of good governance, rather they are only formed with the immediate political benefits to get the power. So in a short, those vote bank politics aspects in the forms of revenue culture or freebies are becoming an important aspect, not just of any political party, but almost all the political parties are promising this freebie and revenue culture. Despite they themselves being against it, they themselves are propagating such culture in almost all the states. So none of the political parties can be considered as free of this. संतोष सैम एडवोकेट्स दलिताइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसकी थोड़ी डिटेल आगे दी हुई है. दलिताइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, स्पेशली दोज पीपल हु बिलोंग टू ह्यूमैनिटी सच एज सोशियोलॉजी, ये आगे जरूर ध्यान से देख लेना. इससे आगे बढ़ने से पहले स्टडी आईक्यू में वी आर ऑफिशियली लॉन्चिंग आवर बैच 4 सोशियोलॉजी का स्ट्रैटिफिकेशन से स्टार्ट होगा. राइट नाउ देयर इज अ सेल, ग्रैंड ऑप्शनल सेल विच इज गोइंग ऑन एट आवर ऑर्गेनाइजेशन. द फीस वुड कम डाउन टू 13,999 only if you use this code. If you are not using the code, the fees would be 30,000. Make use of this opportunity. Since you people are watching this lecture here at this particular platform, I'm pretty much sure that you definitely show this faith on me. And you should always remember that faith is very essential in order to achieve your goal. As far as my way of teaching and other aspects are concerned, I can assure you only one thing. Right now, I can only assure you, I can show you when you get into the batch, that every aspect would be covered sociologically. और जितने नोट्स दूंगा, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूँ, जितने नोट्स दूंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें. Not even a word more. Progressing further, the idea of democracy में state of Indian democracy से related कुछ और कुछ quotes और aspects है. Politics driven by dreams as the potential of luring the attention away from the real conflicts and violence. अब ध्यान से समझो, मैंने पहले आपको कुछ चैलेंजेस बताए ऑन द बेसिस ऑफ विसेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जेन रेज और ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्कॉलर्स हियर. बट
ये मैं वहीं पे भी लिख सकता था, बट ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था इन दैट आर्टिकल, दिस इज हाउ यू मेक योर नोट्स। सिर्फ पॉइंट्स और फैक्ट और डेटा मत देखते फिरो यार, कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंस एंड मैडनेस। कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स एज इट इज लिखने चाहिए, ताकि व्हेन यू पुट दीज स्टेटमेंट्स, योर लैंग्वेज एनहांसेस, नोवेलिटी एनहांसेस, एंड दे कैन गॉडडैम बिकम योर बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स. So every time you don't have to frame your introduction and conclusions, there are good statements which you read, you should make a separate notes of it, good statements. इनफैक्ट मेरे टाइम से मैं फॉलो करता था, और आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है विच वर स्टार्टेड बाय माय कलीग्स और द पीपल whom I knew. They are making such notes on the basis of my theories. Crack IS is one very good example who gives you the notes of good statements. But वो statements कोई और बना के आपको देगा, यूज नहीं होने वाला. You need to have that talent to get those identified statements so that you can apply them up. Let's go back to the statement. Politics driven by dreams has the potential for luring the attention away from the real conflicts and violences. Right? अच्छे दिन. The entire politics have been operating on the gimmick of अच्छे दिन, and just for waiting of those अच्छे dins, our attentions from the real conflicts and violence often gets sorted out. इंदिरा गांधी के टाइम में गरीबी हटाओ, everybody rallied behind this ideology, and we really forgot the real issues present. So what we often see is democracy में कुछ slogans दिए जाते हैं, कुछ aspects दिए जाते हैं, and that largely takes out the attention from the real issues. And if that is happening, then democracy definitely faces the biggest goddamn challenge. Coming to the Dalitization of politics, अच्छा है या खराब है? This topic can be a separate with GS paper 1 में आ सकता है, इंडियन सोशोलॉजी या फिर सोशोलॉजी में तो 100% आ सकता है. एंड ईपीडब्ल्यू से एवरी ईयर इन सोशोलॉजी देयर आर एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस. मैं मिनिमम पॉसिबल बोल रहा हूं. देयर इज, आई एम नॉट सेइंग कि 6 ही आएंगे. इट कुड बी 3, इट कुड बी 9 आउट ऑफ दोज 19 क्वेश्चंस. This is the most authentic source if you have to score 300 plus in your sociology. क्या dalitization of politics bad है? What's the meaning of dalitization of politics? Where we often see the identity politics, especially here based upon the concept of Dalit, is largely getting into the politics and influencing the voting behaviors. For example, 1980s के अंदर, SP, BS, OBCs and Dalits, when they came together, the slogan which was given was that vote से लेंगे PM, CM, आरक्षण से लेंगे SPDM. ये slogan दिया गया था. You can even quote it in your paper as well. Although not a precise example of Dalitization, but casteization of politics का ये slogan बहुत अच्छा example है. On one hand, on the other hand, it is also an instrument of social mobility as it leads to politics of inclusions. हो क्या रहा है? On one hand, identity politics therefore weakens the democracy, but the same Dalitization of politics is also leading to inclusion of those people who are excluded from the societies or who have always become the victims of social exclusions. That means Dalitization of politics is not always negative. Sometimes when the caste comes into politics, it also leads to empowerment. Rajni Kothari says, and I am quoting it, caste needs politics as much as politics needs caste. तो just एक thought दे रहा हूँ, सोचना, ये जो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इज इट सीरियसली एन इंक्लूजन? और दलिताइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इज इट ए पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन और अ पॉलिटिक्स ऑफ रैडिकल एग्जिस्ट? के whether you radically want to come out of that caste, or is it just that you want to get yourself included on the basis of caste? So this is a thought which is open to you, and such statements can largely come as a question in civil services. Be ready for that. How to deepen the democracy? After showing you the positives and challenges on the basis of this article, there are certain aspects which were mentioned in the article by different scholars. Some of them I have also inculcated here. कैसे better किया जा सकता है? By tackling unfinished question of the social aspect. जेन रेज ने जो बोला था कि वो सोशल एस्पेक्ट्स पे अभी भी वीक है, वो सोशल एस्पेक्ट्स को टैकल करना है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है. B.R. Ambedkar sir says axiomatic egalitarianism. That means the egalitarianism which is based much upon secular values, laws, ethos and belief systems. Gandhiji's self-restraint theory can be used here, where we need to restrain ourselves from largely manipulating that freebies, revdi cultures and others, that charismatic personality should at the best remain charismatic in their offices, not beyond that. Jean Drey's focus on democratization of economic and social domain for more adequate realization of political democracy. Obviously the same point comes here. जेन ड्रेस ने कुछ और जो मेरे को इसमें अलग लगा आर्टिकल का मैंने साइड में मेंशन किया है, इक्वेट्स कंटेम्प्रेरी न्यूट्रिशन सिचुएशन इन इंडिया टू साइलेंट इमरजेंसी. ये कहाँ काम आएगा? आपके पेपर 3 जहाँ पे हेल्थ, पेपर 2 जहाँ पे हेल्थ की बात करते हो,
इस तरीके से आर्टिकल्स के नोट्स बनते हैं। आप सिर्फ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी देखते जाओगे, अच्छे स्टेटमेंट में सो जाएंगे, जो ये डायरेक्टली डेमोक्रेसी में शायद नहीं सस्टेनेबल हो, बट समहाउ यू हैव योर टॉपिक ऑफ हेल्थ एज वेल, यू कैन यूज दिस। सो प्लीज डू राइट। हंगर न्यूट्रिशन जो पार्ट है आपका, पॉवर्टी जो पार्ट है आपका, 1 2 3/4 अगेन यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, you can just copy these types of words. Silent emergency है, silent emergency मतलब the nutrition situations which he is talking about here. Concept of autonomy in this article, अब वो democracy part वाला वहां तक खत्म होता है। इसी किताब का क्योंकि हम एक रिव्यू देख रहे हैं, तो एक ऑटोनॉमी से भी रिलेटेड इन्होंने डिबेट की है, स्पेशली गुड फॉर योर जीएस पेपर 1, स्पेसिफिकली विद रेस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर द क्वेश्चंस कम्स ऑन ट्राइब। पेपर 2 इंडियन सोशियोलॉजी के अंदर भी काम आएगा। प्राथमा बैनर्जी सेज द क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमी इन इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 थिंग्स। एदर एक इंडिविजुअल अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं ही सब कुछ हूं, अपुंछ भगवान है, और द कल्चरल ऑटोनॉमी, हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करो, ट्रिपल तलाक प्रोटेक्ट करो, ये ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करो, मेतीस को प्रोटेक्ट करो, कुकीज को प्रोटेक्ट करो, मिजोस को प्रोटेक्ट करो, गारोस, खासी, संथाल्स एक्सेट्रा। वो क्या रहा है, एक कल्चरल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं या फिर अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी की बात करते हैं। That means the very understanding of autonomy has narrowed down in the contemporary time. What needs to be done? Need to shift political territorial autonomy that would give communities real control. इस individual और community और cultural autonomy से shift करके हमें territorial और political autonomy पे focus करना चाहिए। We should give them capacities to take decisions with respect to their local aspects, local self governance. At the same time उनकी टेरिटरी के अंदर जो रिसोर्स यूज है, उनके पास उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। Therefore the cultural autonomies and the individual autonomies are nothing but the gimmicks used by goddamn political parties to gain their votes. रियलिटी में ऑटोनॉमी ये होनी चाहिए। सो द फाइट बिटवीन कुकीज, मेतीज एंड नागास का एग्जांपल से आपको समझाऊं तो नागास एंड कुकीज यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर एज अ हिल ट्राइब। मेनी टाइम्स दे आर यूज्ड टू बी ब्लॉकेड। Today what is happening? Nagas and Kukis are coming together. The fight is with the plain type, people of plain tribe, where we see they are more concerned with largely ensuring the welfare of hill tribes. What's actually happening? It's the manipulation of identities. The reality should be with respect to that how communities' real control of their resources should be there. This should be the autonomy. इससे आगे जाएं आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी में, एक स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा जो मैंने लिखा है, कभी आपके इंटरनल सिक्योरिटी में काम आ सकता है, बॉर्डर मैनेजमेंट में काम आ सकता है। वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। बॉर्डर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द मार्जिन्स एक्वायर सेंट्रलिटी। नॉर्मली बॉर्डर्स होते थे एकदम बाउंड्रीज किसी भी सोसाइटी की, लेकिन रियलिटी में आज ये हो गया कि ये बॉर्डर्स है तो बाउंड्री, लेकिन हमारे सेंटर में आके डोमिनेट करने लगे हैं। दैट आवर एस्पेक्ट्स आर मोर डिटरमाइंड बाय दीज मार्जिनैलिटीज रादर देन डिटरमाइंड बाय द डे टू डे एस्पेक्ट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं। आई होप ये आज का 10-15 मिनट आपके दिमाग की बत्ती लिटरली खोले। इसी आर्टिकल के अंदर माइग्रेंट लेबर के ऊपर कंटेंट था, तो क्या किया, पहले हमने डेमोक्रेसी का कंटेंट देखा, फिर हमने कास्ट का कंटेंट देखा, फिर हमने ऑटोनॉमी का भी कंटेंट देखा, इसके बाद हमने बॉर्डर का भी कंटेंट। एक आर्टिकल में कितने टॉपिक्स का कंटेंट मिल गया आपको। इससे आगे जाएं तो माइग्रेंट लेबर के ऊपर भी बहुत ही नोवेल कंटेंट मिला मुझे इसमें। The population today is being classified into 3. Imagine ये could be a structure with respect to any migration related topic, with respect to your socio and with respect to your GS as well. 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस है पॉपुलेशन के। एक, they are already improved, white collars you can consider, improvable, जिनको बेटर किया जा सकता है, पोटेंशियली डेंजरस, कुछ लोग हैं जो हमेशा डेंजरस मान लिए गए, जैसे ब्रिटिश टाइम के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स हुआ करते थे, उनको डेंजरस माना जाता था। The last one mainly is equated with migrants. Unfortunately, this potential dangerous is today being equated with the migrants. So the population today can be classified. They are understood at least symbolically on the basis of 3 characteristics. One, who have already been improved, can be improved, potentially dangerous, and most of the time migrant labor falls into the 3rd categories. Imagine पूरा आंसर आपका टैकल हो गया अगर आपने ये 2 स्टेटमेंट याद कर लिए। तो ये ना नॉनसेंस लिटरली बंद कर दो आज से। ये डिटेल 365 इतना कंटेंट पढ़ते हो, कोई सी मैगजीन उठाओ, बीट करके दिखाओ इतने से 2 लाइन के माइग्रेशन के कंटेंट को, जिस मैगजीन को पढ़ना है पढ़ लेना, जाओ। पॉइंट क्या है, हार्ड वर्क लगता है इन सबको बनाने में, और जिस दिन ये करने लगोगे ना तो सारी चीजें हो जाएगी।
प्रॉब्लम 99% एस्पिरेंट्स में ये है कि आप 100% देना ही नहीं चाहते हो. You are reading in order to revise it. You are not reading in order to understand it. सच है, बुरा लगे लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 कमेंट ही तो खराब करोगे, लेकिन एक टाइम पे रियलाइज होगा कि बात तो सही थी. आपका अल्टीमेट उद्देश्य पढ़ने का सिर्फ ये है कि मैं रिवाइज करूंगा आगे इसको. आपका उद्देश्य उस टाइम पढ़ते वक्त ये था ही नहीं कि आपको अच्छे से पढ़ना है. बिकॉज अगर 100% है, इफ यू हैव द कैपेसिटीज ऑफ गॉड डैम गिविंग 100%, देयर इज नो गोल इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज लार्जर देन योर बिलीफ सिस्टम. स्टार्ट डूइंग दिस और एल्स लीव यूपीएससी. Coming to idea of democracy, hurt करता है यार, because I see people wasting their time. So I'm sorry if I'm being apologetic just for the sake of being, not just because you're seeing this, because I have that passion for civil services, and I want people to come out of this vicious circle which can largely end up in spoiling their careers. So it's just like a brotherly attitude which I have towards all of you. Change in the nature of exclusions. अब चौथा कंटेंट किधर आया? हमने ऑटोनॉमी का कंटेंट देखा, हमने ट्राइब का कंटेंट देखा, हमने कास्ट का कंटेंट देखा, हमने डेमोक्रेसी का कंटेंट देखा, हमने बॉर्डर का कंटेंट देखा, और वैसे ही हमने माइग्रेंट लेबर. 6 कंटेंट एक ही आर्टिकल में मिल रहे हैं, लेकिन आप एक ही टॉपिक को पढ़ोगे. अब इसी के साथ साथ एक्सक्लूजन पे भी एक कंटेंट है. अगेन देखो, आपके सिलेबस उठाओ यूपीएससी का. सोशियो में एक्सक्लूजन स्ट्रैटिफिकेशन में है, इधर जीएस में आपका सोशल जस्टिस और वनरेबल सेक्शंस में है. Earlier exclusion was manifest. It was directly visible that these people are being excluded as they were largely not permitted. पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 1000 years पहले की सोसाइटीज में जाए, 100 years की सोसाइटी में जाए, the lower caste was excluded because of the notion of pollution and purity. It was clearly visible. Today, people are not excluded in simple sense. इतना easy नहीं है वो exclusion देखना, because are included precisely through exclusion. You include people by excluding them. इसका मतलब क्या है? One simple सा example लूं तो we see certain people are included in order to exclude them. The best possible example जो सटीक से फिट होगा, बोला जाता है pinkification of jobs. Women were allowed into the job so that they can be kept out of the job. मतलब women were allowed into the jobs which were considered as women specific. इन जॉब में लाने के कारण उनकी डिप्रीवेशंस को टैकल किया जा सके और उनकी डिमांड को वहीं तक रखा जाए ताकि कल ये बाकी लार्जर शेयर नहीं डिमांड करे. सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. पॉपुलिज्म के ऊपर एक और टॉपिक है, ये आएगा इस साल, क्वेश्चन लिखवा के ले जाना मुझसे. रेवड़ी कल्चर, फ्रीबी कल्चर, आदित्य और ईपीडब्ल्यू के अंदर पिछले 3 महीने में 5 आर्टिकल आ गए हैं पॉपुलिज्म के ऊपर. बनता है ये क्वेश्चन 100%. आदित्य निगम ऐसे ऑन पॉपुलेशन इसी किताब में लिखते हैं, निर्गुणा पीपल, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आई एम गिविंग यू दिस डेटा. निर्गुणा पीपल, एट्रीब्यूटलेस पीपल, कोई शेपलेस पीपल है, दैट इज नॉट प्रिविलेजिंग एनी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल और एनी स्पेसिफिक कल्चरल आइडियोलॉजी. ये वो लोग हैं जो न तो किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं, न कुछ एक पर्टिकुलर कल्चर को आंख बंद करके सेलिब्रेट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस इन इंडियन सोसाइटी टुडे. जीन ड्रेस का लास्ट कोट दे रहा हूं मैं यहाँ पे. I plead guilty of overconfidence in Indian democracy. The health of the Indian democracy looks worse. If this is the way you really want to understand sociology or GS, our batches of study IQ have already started. The GS batch gets closed or gets winded up on 30th. The sociology batch have just started. Make the use of grand sale if you really want to get into the batch. I hope you enjoyed this session. At least the purpose of opening up your mindset is getting fulfilled. Thank you and do like and share यार. Because बहुत सारे लोगों को मुझे गलत प्रूव करना है इस दुनिया में. That students are only concerned about जब तक फ्री में दोगे सब कुछ लेंगे, जिस दिन कुछ बोलोगे they are not ready. Let's prove such community or such clan of people wrong. I'm here working with altruistic will. I'm not expecting an altruistic will from you. I just want that if you could share, if you feel that it benefited you, do share this video. And I hope you are making the notes of it. And one more thing, ये सारे के सारे PPTs और content मेरे Telegram channel पे available होगा. If you want, you can go and take that up. Thank you.